अरे Hi. वाह! सिंगापुर से भी हैं, सिंगापुर से भी हैं। Yes. Namaste everyone. Welcome to Hindi University. Really excited to have all of you this Sunday. As you know, my name is Ashutosh and we meet every Sunday 8 a.m. US Pacific time, which is the time on the west coast of the US to learn about the Hindi language. For those of you who are completely new to Hindi University, you can learn more about us by going to our YouTube channel, youtube.com/Hindi University. If you're interested in joining our live classes that we have every Sunday, you can get all the details on our page, tiny.cc/Hindi University. Well, today we have a very special class. We don't have a Hindi class, but we have a guest professor, Professor Sunil Bhatt. He's a Hindi professor at the University of British Columbia, and we're really excited to have him join us and enlighten all of us and guide us in the Hindi journey. And for him, like we have people joining from worldwide to listen to him and what he has to share. So we have Delia, our advanced Hindi student from Germany. She's going to introduce Professor Sunil. So Delia, go ahead. थैंक यू आशुतोष जी। नमस्ते सब लोग। मुझे प्रोफेसर सुनील बात की परिचय करने का मौका मिला। तो प्रोफेसर सुनील बात कनाडा में रहते हैं और इस समय मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में हिंदी उर्दू सिखाते हैं। उन्होंने क्रोएशिया में यूनिवर्सिटी ऑफ zagreb से कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स की पीएचडी मिली थी और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से रशियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर में एमए किया था। यानी कि वे जरूर जानते हैं कि विदेशी भाषा सीखने के क्या मतलब है। हम एचयू स्टूडेंट्स के लिए जो बात बहुत दिलचस्प है कि है वो प्रोफेसर सुनील बात को साउथ एशियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर्स सिखाने में बड़ा अनुभव है। उन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया में सिखाया है। इसके अलावा प्रोफेसर सुनील भट्ट इंटरनेशनल जर्नल्स में कई आर्टिकल्स लिंग्विस्टिक इश्यूज पर लिखे और उन्होंने कुछ किताबें और जर्नल इश्यूज फॉरेन लैंग्वेज एजुकेशन के बारे में एडिट किया था। शायद हम लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी बात है कि उन्होंने एक अच्छी हिंदी टेक्स्ट बुक लिखी है और जैसे कि हम में से बहुत लोग जानते हैं, उनका एक हिंदी पे यूट्यूब चैनल है जहां लोग हिंदी ग्रामर और देवनागरी राइटिंग भी सीख सकते हैं। ये वीडियोस बहुत देखने लायक हैं क्योंकि वे जोड़ते हैं और आसानी से समझ आते हैं। आखिर में समरी देने के लिए प्रोफेसर सुनील भट्ट एक बहुत अच्छे हिंदी अध्यापक हैं। Amazing. Thank you so much, Delia. On behalf of everyone at Hindi University, welcome to Hindi University, Professor Sunil. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुझको बहुत बहुत शुक्रिया और आपने तो इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, शायद मुझको बहुत बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि आप लोगों से बातचीत होगी और आप लोगों का अनुभव मेरे काम भी आएगा। मुझको बहुत खुशी है ये देख के कि यहाँ अलग अलग पता नहीं कहाँ से लोग हैं, पूरी दुनिया से लोग हैं यहाँ पे। तो जी सर, जी सर। तो एज आपको लग रहा होगा, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात कर सकते हैं। ओके, श्योर, एब्सोल्युटली। स्टूडेंट्स जो है वो हर लेवल पे है। सम ऑफ देम आर कंप्लीटली बिगिनर, सम ऑफ देम आर एडवांस। एंड जैसा कि आपने बोला, दे जॉइनिंग फ्रॉम वर्ल्ड वाइड, राइट? सो वी हैव अ बिग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। बहुत सारे नॉर्थ अमेरिका में हैं, बहुत सारे कैरिबियन कंट्रीज में हैं, यूरोप में भी बहुत सारे हैं, और कुछ जो है वो इंडिया से भी ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ जो है वो हिंदी, नॉट हिंदी बट बाकी की लैंग्वेजेस के प्रोफेसर भी हैं. So you have a mixed group basically. You have academic as well as like professional people as well as student. So सबसे पहले हम वही चालू करेंगे. Professor Sunil, tell us about your journey. How did you start into the Hindi language? And since you also have experience in other languages like Russian and Croatian, so you have experience on both sides, teaching a foreign language as well as learning like multiple foreign languages. तो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए, एंड आई एम श्योर स्टूडेंट्स विल हैव क्वेश्चंस एंड आई विल आस्क ऑन देयर बिहाफ. एब्सोल्युटली, या
Thank you for the question. I mean, it's a long journey. I've been teaching for more than, I guess, 25 years, and before that, I studied, Russian and Croatian. So I mean, I studied Russian somehow. I don't know. Like when I was in school, I was always into foreign languages. I mean, I remember I was. हमारे पास घर में एक like radio German course था. So I started learning with that by myself, and then when I finished my what we call graduation in India, and here it's called undergrad, BA, BCom actually. I was not interested in economics. I mean, that was just like as we do in India. But I was very much interested in a language, and I had no idea which language, but I just wanted to learn a foreign language. And there were two options: German. I don't know whether you've been in Delhi or not. I mean, German and Russian, and I got admitted to both. But the thing was, German was in the North Campus, which was very far away from my place, and Russian was close to my home. So I decided to take Russian. Yeah, that was it, and that's how it started. And then after that, I got a scholarship. And believe me, when I studied Russian language, I realized that I how much I love languages and how much I'm made to be a grammarian, right? एंड उसके बाद फिर मैंने मतलब सीखना शुरू किया, बहुत अच्छा लगा. उसके बाद मैं एक अच्छा स्टूडेंट भी हो गया. पहले मैं स्टूडेंट अच्छा नहीं था. So I became a very good student, and then I got scholarship and then started studying and went to Russia for a while for a part of my master's. And then when you're studying Russian in India, it's actually not a Russian, it's a Slavic studies. So Slavic as Russian as the main language, and along with Russian, you take another Slavic language. And I had Serbo-Croatian at that time, like Serbo-Croatian was joint language at that time. And then I got an offer to do my PhD in Croatia, Zagreb. So I ended up going to Zagreb, finishing my PhD, started teaching right over there. And then I stayed for a very, very long time in Croatia until 2008. And and then I decided I needed some change in my life. So I started applying for the positions, and then I got one in ASU, Arizona State University, but it was a one-year job, and then after that, Rutgers, New Jersey, and then uske baad मैं Singapore गया. That's why I was very happy to see someone from Singapore. Singapore is really, it's a very, very, I mean, I taught in NUS, so I don't know who was that from Singapore. Yeah, Teresa ji. Yeah, Teresa, yeah. So I studied I taught in NUS for 5 years. I think that's the, yeah. And then after that went to Toronto, and then finally ended up in British Columbia. So that's my whole language learning and teaching journey. Yeah. And then when I was learning and when now I'm teaching, the things have changed quite a lot. I mean, क्योंकि पहले technology कम थी, right? So it was more book-based learning, and now things have changed quite a lot. Now learning has become quite easy, quite interesting, and the pedagogy has also changed. I mean, initially it was just like grammar and then practice, but now it's more communicative. I mean, so that's, and it's yeah. तो जैसे आपने रशियन क्रोएशियन लैंग्वेज जो है वो काफी टाइम से सीखी, सो आपने उनको पढ़ाने का नहीं सोचा? हाउ डिड यू शिफ्ट फ्रॉम languages Yeah, that's actually, in fact, when I was learning Russian, the idea was to go and become a Russian teacher. So I mean yeah, so I was being trained to teach Russian, but kismat se I got an offer to go to Croatia to do my PhD. Okay. And along with PhD, it happens in North America also, and also in Europe, they give you some classes to teach. You start teaching, and along with teaching, then finally, when I finished my PhD, I already had a full-time job. So, and then teaching was Hindi at that time. So they offered, and by the way, that was a year, कितना 91-92 जब लड़ाई चल रही थी, जब मतलब यूगोस्लाविया में लड़ाई चल रही थी. So it was the war time. So at that time, I mean, I don't know, it was, for me, it was not that bad, but पर उनको प्रोफेसर चाहिए था, तो उन्होंने कहा, सुनील, आपको लिंग्विस्टिक्स आती है, आप हिंदी भी जानते हैं, आपने क्रोएशियन भी सीखी है, सो यहाँ पढ़ाना शुरू कीजिए.
तो मैंने वहां पढ़ाना शुरू किया, तो उस तरह से मैं मतलब हिंदी पढ़ाने में आया, उसके बाद फिर उसी में रहा। अमेजिंग। सर थोड़ा बहुत हमको लाइक एक गोल जो हिंदी यूनिवर्सिटी का है वो ये है कि students should have the same experience as if they're sitting in any like a global university or a US university or a European university, right? थोड़ा बहुत स्टूडेंट को बताइए how is it being in a like you know a university environment जहाँ पे आप एक हम लोग बाकी के कोर्सेज तो लेते हैं, you know if you're studying engineering you will take the engineering courses, biology or medical you'll take those courses. Not everyone is fortunate or you know that have that capacity to take the language courses. थोड़ा बहुत उसके बारे में बताइए, क्लासरूम सेटिंग आप कैसे स्ट्रक्चर करते हैं कोर्सेज को इन द यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट, you know थोड़ा उसके बारे में students can learn. Yeah, Yeah. I mean, as जितना मुझको समझ में आया है कि आप हिंदी यूनिवर्सिटीज में क्या करते हैं और हम जो मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटी है उनमें क्या करते हैं, उसमें फर्क ये मुझको लगता है कि आप ज्यादा अच्छा काम करते हैं, क्योंकि क्योंकि आपके स्टूडेंट आपसे सीखने के लिए आते हैं, उनको ग्रेड नहीं चाहिए, right? उनको उनको ग्रेड नहीं चाहिए, उनको मार्क्स नहीं चाहिए, तो वो अपनी इच्छा से सीखने आते हैं, तो ज्यादा अच्छा सीखने की कोशिश करते हैं, अपने दिल से सीखते हैं। यहाँ हमको ग्रेड भी देने पड़ते हैं, यहाँ हमको उनसे मतलब क्विज भी लेनी पड़ती है, और कई 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 कारण है, तो इस वजह से थोड़ा सा हमको थोड़ा स्ट्रक्चर रहना पड़ता है, right? कि भाई हर 2 हफ्ते में 2-3 हफ्ते में एक क्विज होगी, फिर आखिर में एक वो होगा, और हमको फिर देवनागरी सिखानी बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी जो है बिना देवनागरी के स्कूलों में नहीं सिखाई जा सकती है। आप लोग जैसे आपकी हिंदी यूनिवर्सिटी में मैंने सुना है कि देवनागरी पे इतना ज्यादा जोर नहीं देते हैं, बोलने पे ज्यादा जोर देते हैं ना, तो आई मीन you try to teach more communicative so that students can go and speak Hindi in India, or with their Indian friends, or watch Bollywood movies or something like that, right? And for that you probably don't need Devanagari, but in Hindi here in our settings we do have to do that. But what would be common is we also, even in the universities, we also actually try to have this communicative language teaching approach. Even if the students come with the intention of getting grades and everything, but the main aim is also still it's the main aim is to go and talk to and mostly relatives, because they are the second, third generation of Indians here, relatives back home, and also watch Bollywood films. So communicative is still very, so how I structure is I've actually shared my material with Delia also. So what we do is, okay, because I'm a grammarian, so what I do is actually I organize based on grammar, but grammar is the structure is grammar based, but structure is behind the communication, right? So on the basis of that grammar, I try to come up with some kind of activities which would force students to use that exact grammar, that precise grammar. So that's where actually Hindi University and our universities meet, I would say. तो आपने आपने बताया कि यू नो बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ द ग्रामर यू डू सम एक्टिविटीज। मैंने आपका Yeah. वीडियो देखा था, थोड़ा बहुत आपने बताया था कि जब आप फ्यूचर टेंस पढ़ा रहे होते हैं तो यू रियली ब्रिंग द क्रिस्टल बॉल इन द क्लासरूम Oh yeah. एंड tell students that you can predict the future and you can make fancy sentences using that crystal ball. थोड़ा Yeah. और बताइए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं हिंदी यूनिवर्सिटी में क्लास के अलावा, संडे क्लास के अलावा देर आर लाइक 12 प्लस प्रैक्टिस सेशंस थ्रू आउट द वीक। तो थोड़ा आप जो फन एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में बताइए, व्हाट अदर एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स शुड ट्राई टू एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस। Yeah, I mean, so like I said, it's all grammar based, right? कि कौन सी ग्रामर हम उस दिन करना चाह रहे हैं, उस बेस पे मैं एक्टिविटीज बनाता हूँ, right? And by the way, I mean, there are lots of pedagogical material where you have activities also, so you can go through that as well. I mean, it's not that I myself created all these things. I did create some of them, but I read through the pedagogical material how to teach. उससे फिर मैंने भी activities अपने लिए बनाई हैं. Just, I mean, let's say
For example, if you're learning sakna, right? Sakta. Yes. It's a very, yeah. Okay. What are the three usual things you can, three unusual things you can do, and three usual things you cannot do, right? It's an Yes. activity. चलो think about it कि मतलब मैं चाय नहीं बना सकता, okay, I don't know, मैं juggling कर सकता हूँ, right? And then share with each other and find out, right? So these are the activities. I mean, like as you mentioned that future tense, you know, bring a crystal ball. Okay, tell me, you know, tell me about my future. So tell me, you tell somebody else the future, right? So these are the activities in that sense, right? Or when we are doing padna, let's say, so okay, what do you have to padna, like the compulsive construction, right? What do you have to do when you're studying here? So I mean, yeah, I just bring our UBC card and say, okay, you are a UBC student. You know, tell me, complain about your life. What do you have Yes. to do? You know, all these kind of things. So there are lots of activities you can do that way, right? You know, and then when we are doing, I don't know what terminology you use here, but I mean indefinite tense. मैं करता हूँ और मैं करता था. Yes. Past indefinite. Well, it's not indefinite actually. It's a habitual, present habitual and past habitual, right? तो ये past habitual दूसरी भाषाओं में नहीं होता है, right? अंग्रेजी में नहीं होता है. So I mean, you have a specific construction. I used to do that, right? You don't have that. So I mean, आपकी जनरेशन क्या करती है और आपके दादाजी की जनरेशन क्या करती थी, you know? So all Yes. these kind of activities and you know, and आप आजकल के बच्चे क्या करते हैं, आप क्या करते थे, right? These type of activities, yeah. So आप इतना जैसे कि there are multiple approaches as you said, right? I mean, you are yourself a grammarian. आप grammar based approach पे चलते हैं. आजकल और भी बहुत सारे मेथड हैं. लैंग्वेज इमर्जन भी बहुत पॉपुलर हो रहा है. जी. बहुत सारे मेथड्स आ रहे हैं. Hmm. How do you weigh those approaches? Or as a beginner of the language, people are also distracted by learn Hindi or learn any foreign language in 7 days or 30 days. I know. होता नहीं है, right? So how do you stay focused, not get distracted by the learn a language in like 30 days and stay focused? आपका क्या approach रहता है to motivate the students? I have yet to meet the genius who has learned a language in 7 days. I'm telling you. I mean, this is वो तो मिलती हैं किताबें कि yeah, but I mean immersion is very good, but it's actually hard to have immersion in, you know, if you're living in Canada. Although in Canada it's not that hard. I mean, we have a very strong diasporic community. But oftentimes what we do is, I mean, I haven't tried, but I have heard in other places, you know, they bring students to Indian restaurant. Okay, आज Indian restaurant में जाएंगे और वहाँ, you know, हिंदी में order करेंगे, हिंदी में बात करेंगे और खाएंगे. So, you know, and then and one good thing we have students who have some kind of you know, intuitive language knowledge, क्योंकि बॉलीवुड देखते हैं, घर में बात करते हैं या सुनते हैं, और या फिर अगर पंजाबी भी बोलते हैं, they still know, you know, they have, yeah, so you can mix them with others, you know, those who are absolute beginners. And it's yeah, so immersion based is very, very good. It's possible here, but you know, you'll need to make much effort, but the best is भारत जाइए. भारत जाइए. जी. आप मोटिवेट करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि लाइक स्टे ओवरसीज और स्टे इन अ प्लेस, आप या इंडिया जाओ, ऐसा कुछ रहता है क्लास के अंदर, करिकुलम के अंदर प्लान जहाँ पे स्टूडेंट्स कैन रियली गो आउटसाइड कनाडा टू द, ऐसा रहा है कभी पहले? या कनाडा में तो अभी ऐसा शुरू नहीं किया, पर हमने जैसे जब मैं क्रोएशिया में था तो वहां से हम भेजते थे 3 स्टूडेंट हर साल केंद्रीय हिंदी संस्थान में. और चाहे उनका मतलब संस्थान में आगरा में गए थे, चाहे मतलब उनका कैसा भी, क्योंकि आगरा छोटी जगह है, ज्यादा घूमना फिरना नहीं हो पाता है और थोड़ी आजादी कम होती है इंस्टीट्यूट में, पर वापस भाषा उनकी बहुत अच्छी हो जाती है. Yeah, so when they come back, I mean, the language is really very good. I mean, so, although they do complain about the life, oh, it's a small city, this and that, but still
I mean, the language becomes yours. So yeah, we do have that. I mean, I haven't started here, but in North America, there are like they have just combined program in North America. So they actually do send their students to Jaipur. Okay. So, I mean, whenever we get that offer, you know, we get that emails from the institute. It's, I think, Sasli. And we do share with our students who want to go. But yes, and I do encourage them. But यहाँ पे Canada में, especially in British Columbia, 90% of my students are they're mainly like diasporic students, right? So they do actually go here and there by themselves also. But yeah, I mean, yeah, for Hindi, absolutely, I do suggest them to go, and you know, yeah, that's the only way to learn very good language, in the sense like even the slangs or something. एक और क्वेश्चन जो सर है, रोल ऑफ ग्रामर। आपने बताया कि आप एक खुद ग्रामेरियन हैं। काफ़ी बार ऐसा लगता है कि बहुत सारे रूल हो रहे हैं, लाइक देयर सो मेनी टॉपिक्स, एंड व्हेन यू आर स्पीकिंग इट, स्पेशली अ फॉरेन लैंग्वेज, जैसे मैं खुद ग्रामर सीखना चालू करूँ फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर, ऑन द स्पॉट या ऑन द फ्लाई मेरे लिए एक सेंटेंस बनाना, ये याद रखना कि मुझे ये वाला ग्रामेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट यूज़ करना है, इट कैन बी हार्ड। प्लस रिमेंबरिंग ऑल दोज एक्सेप्शंस, राइट, ये बहुत मुश्किल चीज़ है, इतना आसान नहीं है। तो हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ जगल दैट बैटल कि आपको मेमोराइज नहीं करना पड़े, इट बिकम्स सॉर्ट ऑफ योर नेचुरल इंस्टिंक्ट? इसका आंसर आप दोनों तरीके से बताइए, एज अ टीचर और एज वेल एज ए स्टूडेंट, क्योंकि यू स्ट्रगल फॉर दैट व्हेन यू वर लर्निंग, आई एम असूमिंग रशियन एंड क्रोएशियन एज वेल, बिकॉज उसमें भी आपने जब सीखा था तो आई एम असूमिंग आपने ग्रामर बेस्ड अप्रोच यूज करी होगी। Yeah, it's a very good question and very tough to answer also. I mean, grammar के बिना आप नहीं सीख सकते हैं. Grammar you do need, and good. I mean, the good news is Hindi has a very easy grammar. I don't know whether you agree or not. I try to learn Russian. I try to learn German as well. Present tense बनाना हिंदी में कितना आसान है. एक भी exception नहीं है. Not even a single exception. Present tense, present continuous. थोड़ी सी दिक्कत आती है, like you know, नई construction में, like you know, when you have उसने खाया और मैं गया, right? इसमें थोड़ा सा दिक्कत है. पर हिंदी ग्रामर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इस मामले में. और थोड़ा बाद में जाकर अगर कुछ से ये कंपाउंड वर्ब्स आते हैं, थोड़ी सी दिक्कत होती है. पर बेसिक आम बातों के लिए हिंदी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है उसमें. जहां तक मैं, हाँ, थोड़ा सिंटैक्स में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि सिंटैक्स थोड़ा उल्टा है, मतलब आपका उल्टा है. आई मीन अंग्रेजी का. पर उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है. पर जहां तक एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, वो हिंदी में कम है. पर भाषा में ग्रामर तो सीखनी ही पड़ेगी, उसके बिना नहीं होगा. पर अच्छी बात हिंदी के साथ एक और है. एक तो हिंदी ग्रामर आसान है, दूसरी ये कि हिंदी भाषा बहुत लोग बोलते हैं भारत में ही, बहुत मतलब जिनकी अपनी भाषा भी नहीं है हिंदी. तो अगर आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच है, इफ योर अप्रोच इज लाइक यू वांट टू टीच कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, लेट देम मेक मिस्टेक्स, बिग डील, कोई फर्क नहीं पड़ता. आई मीन बंगाली हिंदी में, कोई बंगाली अगर दिल्ली में आता है तो उसके जेंडर ठीक नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. पंजाबी अलग एक्सेंट के साथ बोलता है. सो खासकर आप लोगों के लिए जहाँ हिंदी यूनिवर्सिटी है, वहां तो ग्रामर की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप तो सब बोलने के लिए सीखना चाहते हैं, राइट? हमारे तो स्टूडेंट को शायद उनको अगर कुछ गलत करेंगे तो शायद उनके पॉइंट्स कम हो जाएंगे, तो उनको तो वो दिक्कत हो सकती है. पर घबराने की बात नहीं होती, सिर्फ बोलिए लगा. और जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने रूसी सीखी, रूसी भी अगर आप लोगों में किसी को आती है या किसी को कोई, आई मीन इफ यू नो, इट हैज 6 केसेस. हिंदी में एक शब्द है किताब, उसका प्लूरल है किताबें, और उसका ऑब्लिक है किताबों. ये 3 फॉर्म है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. रूसी में किताब के 12 फॉर्म्स हैं, जर्मन में भी 4-8 होंगे.
हाँ, तो इस हिसाब से हिंदी वास्तव में बहुत आसान है। अमेजिंग। इसमें 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 इतनी मुश्किल नहीं है, मतलब बस ये है, बस भाषा के साथ मुझको लगता है कि एक भाषा सीखते वक्त, आप जब नई भाषा सीखते हैं, कोई विदेशी भाषा सीखते हैं, तो एक आई मीन यू जस्ट नीड टू हैव वन क्लिक, व्हेन दैट क्लिक हैपेंस, and that click has nothing to do with your knowledge of grammar or not, or your limited vocabulary or not. It's when that click happens, you just start speaking. You start I mean, you keep making the same mistakes and this and that, but that's not a problem. But you just the hesitation, the hitch, that goes away. That's very important. वो कैसे होता है उसको, somebody need to tap into that. I mean, it's that's very, very important, and that happens to everybody. Yeah. जैसे एक सर्जन को पूछा जाए कि आपने फर्स्ट सर्जरी कब करी थी, तो शायद उनको याद भी नहीं हो, बिकॉज वो चालू करते 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 इतनी बार कर लेते हैं कि दे डोंट इवन रिमेंबर फर्स्ट टाइम व्हेन दे डिड इट। सो आई एम असूमिंग आप जो बोल रहे हैं कि आप बस लैंग्वेज बोलते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बिल्कुल। you won't even realize and you will start speaking that language without any issues and without worrying about people are judging you or Absolutely. thinking, right, about your pronunciation etc. Yeah. In case of a surgeon, I mean, it's a life and death issue. यहाँ तो कुछ भी नहीं है। Yeah, that's right. अमेजिंग। एक और जो सवाल है ये थेरेसा जी का ही है, जो सिंगापुर से ज्वाइन कर रही है, वो ये है कि नो दिल्ली जी एक्चुअली, कि जो काफ़ी बारी हम बोल तो लेते हैं हिंदी, बट इंडिया में जो पढ़ाई जाती है और बोली जाती है उसमें थोड़ा फ़र्क है। जो एकेडमिक तरीके से पढ़ाई जाती है क्लासरूम के अंदर वर्सेस जो डे टू डे कॉन्वर्सेशन होती है, तो स्टूडेंट्स को जो नई लैंग्वेज सीख रहे हैं किस पे फोकस करना चाहिए, जो एकेडमिक हिंदी है या जो मोर कैजुअल हिंदी है जिसके अंदर थोड़ा फ्री फ्लो है, और जब वो बोलते भी हैं नेटिव स्पीकर से, नेचुरली इंक्लिनेशन वही होता है कि हम थोड़ा एक पैटर्न फॉलो करें, लाइक हम SOV पैटर्न फॉलो करें या थोड़ा उसी के अंदर रखें, जबकि बोलने में तो बॉलीवुड कुछ भी बोल सकता है, राइट? बॉलीवुड में तो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, राइट? आई मीन, सो आप उसके बारे में क्या क्या शेयर करना चाहेंगे टिप्स? जहां तक आपने पूछा कि किस पे ज्यादा फोकस किया जाए, मेरा तो मानना है, और मैं तो कम्युनिकेटिव अप्रोच वाला हूँ, बोलने पे ज्यादा फोकस करना है। जैसा अगर गलत वगैरह भी बोलते हैं, हम सिखाते हैं विद्यार्थियों को मुझे, और पूरे दिल्ली में सब बोलते हैं मेरे को, राइट? एवरीबॉडी सेज मेरे को, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट शुरू में हर लेवल पर, आई मीन लाइक यूनिवर्सिटी है, आपकी हिंदी यूनिवर्सिटी है या हमारी यूनिवर्सिटीज है जहाँ ग्रेड भी चाहिए होते हैं, बेशक ग्रेड्स के लिए आते हैं, या वो सब के सब शुरू में बोलना सीखने के लिए आते हैं, सब 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 100%, मतलब कोई भी नहीं, 100% लोग हिंदी बोलना सीखने के लिए आते हैं। रिसर्च करेंगे, बाद में ग्रामरियन बनेंगे, ये सब बाद में आता है। तो आई मीन my suggestion is to go for communicative, always go for communicative, and I mean, even in India, I mean, nobody speaks standard Hindi. I mean, very few people speak standard Hindi, very few, and many of them actually don't even know. It happens quite often to me in my classes. I mean, students who are we call them diasporic students, or heritage learners. They said, my mom was saying that you are teaching us incorrect. I said, okay, I'm not teaching incorrect, but your mom is saying what people say, right? And she's right. I'm not saying I'm wrong, but she's right too. we both are correct. So I mean, I personally believe that, and apart from that, the language philosophy I actually subscribe to is language is a dynamic process. I mean, it will change. Grammarians have sat down, they have written a rule. That's fine. It's going to change. आपको मालूम है, किसी जमाने में वह होता था, अब उसको वो बोलना शुरू कर दिया है,
हम आज भी लिखते हैं वह, पर बोलते वो हैं। अब टीवी चैनल्स में जब सब नीचे आता है कई बार वो लिखा होता है, अब मेरे स्टूडेंट्स लिखते हैं वो, तो मैं गलत नहीं मानता हूँ। हाँ, जबकि ये आई मीन किसी दिन ग्रामरियन बैठ के हिंदी के जो मतलब हिंदी के अथॉरिटी जो है, जो मतलब हिंदी के ग्रामर को डिफाइन करते हैं। सेट करती है, वो किसी दिन बैठ के बोलेंगे कि चलो चलो वो को मान लिया जाए, हम्म, तो मान लेंगे। पर फिलहाल नहीं माना है। पर टीवी बोलता है, लोग बोलते हैं, लिखते हैं, तो उससे उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। भाषा एक कोई जीवित चीज है, उसको मतलब बदलने देना चाहिए जैसे 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 बदलती है। मैं ये सेम डिस्कशन हुआ था प्रोफेसर हरीश नवल से और रूपर्ट स्नेल से। उन्होंने भी एग्जैक्टली सेम सेंटिमेंट शेयर किए थे कि ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। लाइक हम जो अब हिंदी बोल रहे हैं वो नहीं हिंदी बोल रहे जो कि 15th सेंचुरी में बोली जाती थी या 17 में बोली जाती थी या इवन 50 साल पहले बोली जाती है। तो वो एक इवॉल्व होती रहती है, जी राइट। जी जी बिल्कुल। हमारे स्टूडेंट जो हैं अभी ट्रिनिडाड एंड टोबैगो या कैरेबियन कम्युनिटी में हैं, जो उनकी हिंदी है उसमें थोड़े और शब्द हैं जो कि पहले भारत में बोले जाते जी थे। जी कभी जी कभी सुन के बहुत अच्छा लगता है कि यार ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। जी। एक और जो है सूरीनाम में देखो। मतलब हाँ, मुझे मतलब कई सूरीनाम के मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, तो यस, वो बोलते हैं हम सरनामी बोलते हैं। मैं उनकी बोल थोड़ी सी अलग से हिंदी है, थोड़ी उसमें सरनामी नाम दिया हुआ उसको, तो मतलब कितनी मीठी बात है नहीं, कि अब रखी है पर अपनी रखी हुई है जी। हमारे बीच में एक है सुरीनामी अभी। हैं? या सो बिकॉज अभी हम ग्रामर पे बात कर रहे हैं। आप जैसे इसमें भी जो इवन टीचिंग मेथड्स में प्रोफेसर्स का भी एक स्टैंड होता है। एक शुद्ध हिंदी पे आते हैं और एक होते हैं मिश्रित, लाइक मिक्स्ड। हम्म कि जैसे प्रोफेसर स्नेल बोलते हैं इवन इन इंडिया, लाइक यू डोंट फिनिश अ सेंटेंस इन द लैंग्वेज यू स्टार्ट विद। तो आप चालू हम्म बोल करते हैं हिंदी और आप खत्म करते करते बीच में उसमें 3-4 लैंग्वेज आ जाती है, राइट। आप फ्रॉम अ फॉरेन लैंग्वेज लर्नर्स परस्पेक्टिव आपका क्या स्टैंड है? लाइक यू प्रेफर शुद्ध हिंदी वर्सेस मिश्रित, या कैसा रहता है आपका? बिल्कुल मिश्रित। जो अब आप मतलब जो जो बच्चा जो लोग हिंदी सीखने आते हैं, वो तो हिंदी बोलना सीखने के लिए आते हैं, वो मतलब वो भारत में जाके पंडित बनने के लिए नहीं आते हैं, right? तो वो जिस तरह से लोग बोलते हैं। पर मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ दोनों शब्द अंग्रेजी के या हिंदी के दोनों शब्द बराबर बोले जाते हैं, वहां ज्यादा हिंदी के बोले जाए। हम्म, क्योंकि आजकल थोड़ा मतलब पता नहीं टीवी वगैरह की वजह से भी जो शब्द बराबर है, मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदी के लिए जो शब्द है वो बहुत ज्यादा संस्कृत का शब्द है, हम्म, वहां हिंदी का शब्द की जगह अंग्रेजी बोल देते हैं, तो उसमें उसमें थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ लोगों को कि हिंदी के शब्द बोलें। अच्छा, एक अच्छी बात ये भी है, देखो हिंदी के में अंग्रेजी मिलाने का एक अच्छा ये भी है कि शुरू में जब बच्चे आते हैं, जब वोकेबलरी उनकी, माफ कीजिए मैं बच्चे बच्चे बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी उम्र कम होती है। एक बात। So yeah, I mean, when they come, uh, they are limited. They are limited in their vocabulary. They are limited in their grammar. So I actually let them, okay, go ahead, use English words because we do it too. So don't be blocked by the lack of vocabulary. So just feel free to use English words, but try to keep the Hindi syntax, Hindi structure, right? And later on, when you gather the vocabulary, you can just replace the words, right? But the click I was talking about, the click needs to happen, right? That click I try to have that click happen, even if the vocabulary is less. It's not big, right? So that's why I don't mind them. I encourage them. Go ahead. बोलिए, अंग्रेजी बोलिए, ठीक है. बाद में जब vocabulary सीख जाएंगे, when you learn the vocabulary, and of course after that you're gonna, replace the words. But try to get into place where you don't have to. Just try flawlessly speak. No, not flawlessly. That's a little too perfect. But try fluently speaking. हम्म, Try fluently speaking, regardless of the. Yeah. मैंने एक बार I watched long ago a film, and they were talking about the Indian, just like a little bit of digression, right? So uh,
So there was a film, I think it's called East is Eastern or something. So they were talking about Indian community that lived in the UK, did not know very good English. I mean, they said they spoke fluently bad English. I really do not mind that. Fluency is very important because bad English can be correct, bad Hindi can be corrected. It's just replacement of thing. But need to be fluent. Fluent is the one that's what I mean when I say click. बोलता हूँ ना, मतलब वो click चाहिए. वो click जो है, ये fluency है. So feel free to throw in the English words, or even like when I was in Croatia, I said, okay, feel free to throw in your Croatian words. Although, Croatian would be if it's very far away from, like Latin, so probably then it won't work. But otherwise, but click chahiye, right? So that's what I was thinking. Yeah. Since you mentioned that, like, we'll shift the gears. I do want to talk about other topics as well, but pronunciation के ऊपर कुछ क्वेश्चन थे. आपने how did you master your mastery over the like जो आपका pronunciation है बाकी के languages के ऊपर, चाहे वो Croatian या Russian, or same approach, are there any templates that you use to help the Hindi learners कि वो अपना pronunciation थोड़ा अच्छा कर सके? Yeah. Okay. That I would say could be a tough thing to know. Pronunciation is, although when I was in Croatia, people said I spoke very good Croatian and I didn't have much accent, but I could fool people on phone for probably 3 minutes, and after that they would figure out that, okay, there's a foreigner speaking on the other side, right? But up to 3 minutes I could do that, right? So pronunciation, in my videos, I actually do show the vocal apparatus, how it works, how you pronounce retroflex and how you pronounce dental, right? That might help, but again, it's, if you want to be very, very good, just like a native, then probably very good pronunciation will matter, right? Will matter. But if you're, again, if your aim is to just communicate, talk, and understand, then probably a little bit of a compromise with pronunciation is probably, it's not going to hinder your learning of Hindi. But to learn precise pronunciation, you just need to focus on, again, I'm a grammarian, so मैं grammar की तरह से सोच के बोलता हूँ. Focus on your vocal apparatus. How do you pronounce it? So when you're pronouncing, I don't know, the biggest thing we Hindi people say, the biggest difference, oh, come on, these Europeans cannot pronounce the and t, right? These things, right? The and t. The only thing we can do is, just tell them how to pronounce, how your vocal apparatus goes, right? So when you're pronouncing dental sounds, the tip of the tongue touches the upper teeth, the, and then when you pronounce retroflex, the tip rolls back, the. So if you are taking the right position of your vocal apparatus, you will definitely pronounce correctly, but your ears might not be trained to hear your own voice. Because ears are, ears. Okay, again, I have lots of anecdotes. Please do share. Yeah. So I was when I was in Croatia long ago. That was long ago. So I had a colleague. So he said, Sunil, can you babysit my 3 kids? And one was 11, and the other 2 was like 7 and 6. So I said, okay, fine. So when we were alone, we started playing this Hindi game, Chidiya Ud. You know that? Yes. Like a Chidiya, this Chidiya Ud, and then Car Ud, because car doesn't fly, so you should keep your finger on the table, right? When the things that fly, you take that, Chidiya Ud. So the game is called Chidiya Ud. Yes. It has 2 sounds, R, in both, Chidiya and Ud, right? So when I pronounced that, the 11-year-old was not able to pronounce. He was saying Chiriyaur with R, and the other 2, in first instance, after hearing first time, they actually pronounced perfectly.
Chidiya Ud. So their ears were still not fully formed or fully fossilized. Their hearing was not fully fossilized, and they could pick up in like 2 seconds. In 2 seconds. That's amazing. I mean, like, I'm a grammarian, so I observe all these things. I was really, really surprised within 2 seconds. So, I mean, अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो शायद वो हो नहीं सकता. But I mean, if you can do, if you can follow the vocal apparatus, I'm pretty sure that you'd be able to make it the sounds. It's a different thing whether you'll be able to hear it or not. But yeah. That's an amazing example. So we have to be a baby, basically. At least Yeah. we are open-minded like a baby when we are speaking it. And another thing, I mean, I actually probably it might not be, although in like language pedagogy or in Chomsky's how do you call language, how do you say, language acquisition device, it says that after one point of time language acquisition becomes very hard. Like they call it a critical age hypothesis, right? After that critical age. So critical age, different people say it's a 13 years, 11 years, 12 years, something, right? But I have actually seen also very, very interestingly in England that people, let's say, who came to England without knowing any English in England and started just living with the English people, their English was far better, and at least pronunciation was far better than those who learn English in India. I mean, like far better in the sense, far close to the English pronunciation, right? So probably that critical age hypothesis doesn't exist, So it's a point of encouragement that even if you're grown up, you might be able to actually make that switch in India. So yeah, I want to end it in a more positive note that you can do it. So we'll shift the gears. I know you teach, and this is again came from students, right? I mean, not just language. You teach some of the other topics as well. You do touch upon like Bollywood movies, in which you teach concepts through movies, and also you spoke about Sufi and the Bhakti tradition. Tell us a little bit more about that and how that influences like Hindi learning. दोनों के बारे में बताइए. Yeah. I mean, yeah. So I mean, okay. So let's talk about Bollywood and Hindi learning, right? So, probably there should be something in the material I sent to Delia. So usually, again, based on grammar, I try to bring Bollywood posters or Bollywood songs if they're following that grammar pattern, right? So I mean, just to show that how, and I remember there was a song that was following conditional in Hindi, in the खूबसूरत film का गाना है एक, Qaida Qaida or something. Anyway, so these things I do bring that, but that is separate from my other courses, like my other courses in which I teach literature course, Sufi and Bhakti literature, that is a medieval literature, and also a Bollywood film course where we actually analyze the films, the narratives of the films. So the more based on thematic base. So they are separate from the language classes. So they are not included in the language classes. The thing is, I mean, in North American universities, it's different. I mean, I've taught in Europe also, so the system in Europe is different from North America. So in North American universities, it's more flexible. So even if you're studying engineering or sciences or something, you do need to take some humanities courses, right? And that's not there in Europe. In Europe, like from the very beginning, you're just going into, I don't know, this philosophy. So you're doing only philosophy, right? You're not doing any science courses. Or if you're doing, I don't know, biology, you're just going into biology, right? Not taking. So in the North American universities, you have this, it's called distribution requirement, right? You need to take, the philosophy is that they want to make a student
overall capable of like talking about, I don't know, Greek philosophy as well as mechanical engineering, or I don't know, I'm just exaggerating, right? But because of that, we offer courses in which students from other faculties come. So these are the courses for those actually, for those students who need to make some get some humanities requirements. So they come and take Bollywood courses and something. तो आप Yeah. मूवीज का selection कैसे करते हैं? You take one like a trend changing movie from each decade and then you make them watch on their own and they come and discuss the Y- narration. कैसा होता है? Actually, before pandemic, we used to have a screening also in the I see. class. So I mean, like imagine the class of 3 hour class and you watch film. Yeah. So, and then 1 hour of discussion. So, I mean, yeah, I mean, so I try to do is, I mean, in my film course, what I've done is I've taken films only from after independence, right? Yeah, so I have separated, I mean, like I have a, how do you say? So there are 13 weeks we have, so I've taken like 12 films. Every week we take one film based on the theme, or sometimes depends on, yeah. So initially the first theme is the Indian independence and nation building, right? So in that film we have Mother India, which is an iconic film. So I try to take iconic films, right? And then Raj Kapoor, like the showman Raj Kapoor. So that's one theme. So we take Awara from Raj Kapoor, and then so courtesan culture, फिर रेखा की उमराव जान ली हमने, तो और फिर बाद में आते आते गैंगस्टर फिल्म्स आना शुरू हो गई थी 90s में, राइट? 90s, लाइक सत्या, Gangs of Wasipur, Black Friday, pata nahi kya. I mean, these things, right? Omkara, right? So gangster films. So gangster film is also one of the topics, right? And yeah, others also. Rajesh Khanna, the first superstar. That was also a topic, right? And then Angry Young Men, jab Amitabh Bachchan, got into the scene. So, he created a persona of angry young man. So us theme pe. So that's how we choose the films. So I mean, I have chosen it, and then whenever, if I feel that some new film has come that has really made some impact on the film industry, so I try to take that too. Yeah. सेम चीज अगर आप उसके ऊपर बता सके, सूफी ट्रेडिशन एज वेल एज द भक्ति ट्रेडिशन, उसमें आप जनरली व्हाट डू यू टच अपॉन? इज इट आल्सो Yeah. So Sufism and Bhakti, it's very interesting. I mean, okay, so that has very little to do with Hindi. I mean, it is more to do with the medieval literature. It's a medieval literature, right? So Sufi and Bhakti trend is it's kind ये जो है, it's a revolutionary movements, both of them, like breaking the rigidity of mainstream Islam and mainstream Hinduism, right? So उसमें फिर हम सूफी तो खैर हमारे हिंदुस्तान में कम पढ़ाया जाता है, पर भक्ति का तो हमेशा पढ़ाया जाता है। भक्ति लिटरेचर तो पढ़ाते हैं, तो कबीरदास है, सूरदास है, मीराबाई है, कभी कभी नानक भी पढ़ाते हैं उसमें। तो मैंने मतलब सूफी और भक्ति लिटरेचर को I have actually divided into poets. So what I do is I just, like, every week we take one poet, and then I go through the biography, all these legends surrounding, that, and then we take some poems also. So I mean, I take Bulle Shah, Shah Hussain, Mia Muhammad Baksh. These are Sufi, and then from Baba Farid also, and then from Bhakti literature I take Nanak, Kabir Das, Surdas, Tulsidas. So Surdas and Mirabai are Krishna Bhakti, and Tulsidas is he Ram Bhakti, and then Guru Nanak and Kabir are Nirgun, so literature. So मैंने मतलब I mean हर हफ्ते एक किसी कवि को, एक सूफी भक्त को, सूफिया भक्त को लेते हैं, और उसको फिर उसको पढ़ते हैं और उसके जीवन के बारे में सीखते हैं। Awesome. Well, it's been amazing with talking to you, Professor Sunil. I know a lot of students want to talk to you in person in the sense on the Zoom.
So what I'll do is, like, for those who are watching live on Facebook, if you're interested in asking a question, as I said, like, you can join the Zoom link as well and talk to him in the next 10-15 minutes. So we'll stop the broadcast, and we'll thank everyone who joined, this enlightening conversation with Professor Sunil. And the rest of the session will have the 10-15 more minutes. All of you who want to ask the question directly, this is going to be your opportunity. Keep it brief. We'll have 3-4 introduction. 3 or 4 of you can introduce yourself and then briefly ask the question, and he'll try to summarize it. So I'm going to stop the broadcast. So the rest of the session will not be shown to anyone. So give me just